All right. Hello and welcome, students. Myself, Kumar Saurabh. Today, again, I'm present in front of you with a small critical reasoning passage. So, first of all, we are going to read it, understand it, analyze it, and then on the basis of all of that, we are going to solve the set of questions which are there. So, sit tight and let's just start with our discussion today. All right. So, the passage goes like this. Every global crisis has its own philosophical import and an embedded message. We can ignore it only at our peril. अपने पेरिल पे हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना चाहिए. एवरी ग्लोबल क्राइसिस के बारे में बात हो रही है. इन मोर रीसेंट हिस्ट्री, वर्ल्ड वॉर II ended with unmistakable warning against nationalistic zealotry and use of nuclear weapons. तो हर एक जो कैटास्ट्रॉफी होती है ग्लोबल नेचर की, उसका अपना इम्प्लीकेशन होता है, ठीक है. और उसको इग्नोर कर हम लोग सिर्फ अपने पेरिल पे उसको इग्नोर कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए. हमें लेसन्स सीखने चाहिए. वर्ल्ड वॉर II का एग्जाम्पल दिया गया और ये बताया गया कि ज्यादा अगर आप पेट्रियोटिज्म करोगे तो कहीं ना कहीं वो भी ज्यादा अच्छा नहीं होता है. और यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बताया जा रहा है कि ऑफ कोर्स यूज ऑफ इट इज नॉट गुड एट ऑल फॉर ह्यूमैनिटी. The world managed to heed both the messages for about 70 years before one of them, extreme and exclusivist nationalism, started raising its head again in several parts, including India. अब उसके 70 साल बाद बहुत सारे parts of the world में extreme nationalism अपना सर दोबारा से उठाना शुरू कर चुका है. Use of nuclear weapons has although been refrained from, nuclear weapon का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, but its deterrent value still being traded as a weapon of blackmail if not destruction. कहीं ना कहीं आज के टाइम में ना न्यूक्लियर वेपन्स का यूटिलिटी यही रह गया है कि यूज करोगे तब तो अर्थ बर्बाद हो जाएगा, है ना. तो यूज नहीं होता है, बट इसको एक ब्लैकमेल करने के लिए यूज इसका हमेशा किया जाता है कि सी आई एम अ न्यूक्लियर पावर, मेरे से ज्यादा पंगा लोगे तो मैं बर्बाद कर सकता हूं. ये ब्लैकमेल करने का सिचुएशन हमेशा चलता रहता है. सम मैसेजेस लेड टू द ग्रेटर गुड ऑफ ग्रेटर नंबर बट साइमल्टेनियसली ऑल्सो लेड टू इट्स ट्वीकिंग टू रीइन्वेंट ओल्डर इविल्स बाय सम अदर नेम. क्या? लेट्स सी द एग्जांपल. Imperialism led to 2 world wars, but their horrific effects paved way for good sense to prevail, resulting in greater cooperation among nations and opening up national economies and international trade. But it was also used by some to unleash their hidden economic imperialism. ठीक है, imperialism से हुआ क्या? Connections, देखो positives की बात करते हैं पहले. इंपीरियलिज्म से कनेक्शंस जो एस्टैब्लिश हुए, ट्रेड का नया सोर्सेस पता चला, टेक्नोलॉजी नया आया और उसका यूज नए तरीके से होना शुरू हुआ. बट इससे एक नेगेटिव चीज भी हुई है, वो ये कि हिडन, यहाँ पे दिया हुआ है, हिडन इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म का सीन भी शुरू हो गया. इंपीरियलिज्म था क्या? पहले तो ये जान लो. इंपीरियलिज्म के थ्रू जो बड़े पावर्स होते थे, कॉन्टेम्परेरी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जो बड़े पावर्स थे, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन, तो ये कॉलोनाइज करते थे अलग अलग टेरिटरीज को. जाते थे दूसरे टेरिटरीज में जहां पे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी और बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं होता था, वहां जाके वो कॉलोनाइज कर लेते थे, रूल करते थे वहां पे, वहां के सारे रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते थे. तो इससे एक पॉजिटिव चीज भी हुई कि कनेक्शन स्टैब्लिश हुए, ट्रेड बढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी, पर साथ ही साथ इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म का स्कोप भी जेनरेट हो गया. Then, all this, however, was always open to amendments from time to time, thus preventing the world from total collapse. Self-explanatory है ये तो. Yet we haven't apparently fully come to grips with the most alarming of the global crises of environmental degradation yet. We still are fighting for our economic interest instead of unitedly facing the effects of the environmental crisis. अब ये जो एनवायरमेंटल क्राइसिस वाली बात है, यहां पे असली इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है. तो कहीं ना कहीं आज के टाइम में कोऑपरेशन हर चीज में होता है,
बट उसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट ज्यादा लाई करता है बजाय कि इन्वायरमेंटल इंटरेस्ट। ये बात यहां पे बोल के कंक्लूड कर दी गई है पैसेज को। Let's move on to the first question. Which of the following statement is the author most likely to agree with? Here, yes, the right answer is C. Very easy option. International trade enhanced after the world wars. Next question. Which of the following most accurately expresses the main point of the passage? Here, the right answer is going to be D. Countries should unite their effort in creating resilience against the environmental crisis. इसी बात पे मेन फोकस था, मेन पॉइंट यही था, मेन कंक्लूजन यही था। Next question. What role is played by the author's claim that use of nuclear weapons have been refrained from after World War II in the argument? तो ये क्या रोल प्ले कर रहा था? Very easily the answer here is going to be A. It forms the premise. इसके बेसिस पे हमने कंक्लूजन अराइव किया, एक्सट्रैक्ट किया। Next question. Which of the following can't be inferred from the article? Right answer here is C. India use nuclear weapons to blackmail its enemy countries. India does not do that, and as far as the passage is concerned, इसमें तो बिल्कुल ही कहीं पे mention ऐसा नहीं है। Last question of this paragraph. Which of the following statement forms the premise of the argument that every global crisis has its own philosophical import and an embedded message? The right answer here is B. World War II ended with an unmistakable warning against nationalistic zealotry and use of nuclear weapons. So this marks the end of the whole passage and the questions related to it. I hope you guys understood everything which I tried to discuss today. Thank you so much for watching the video. Keep on watching all the videos which we upload on CLAT Gurukul's official YouTube channel. I will see you next time. Till then, take very good care of yourself. Thank you so much.